Teenagers health consultant, adolescent health ambassador, creator of Parent Teens, one-day workshop for parents, teachers and teenagers. He is the president-elect of Academy of Pediatrics Gujarat in the year 2017. He is the very renowned child specialist with keen interest in parenting. He has conducted parenting workshops in various schools, corporates and pharma companies in and out of Gujarat. So he is going to discuss about some of the situations faced by parents these days. These are time, failure to imbibe moral and ethical values, behaving with guidelines of one's own upbringing, emotional acknowledgement, imbalanced lifestyle, pressure to fulfill all the needs, and unwanted comparison and exposure to technology. I'd like to so I'd invite him to speak on the topic. Thank you. He used to fly a jet fighter pilot, and once upon a time, Gujarati, Hindi, English, Kannada language is fine. ज़्यादा हिंदी, ज़्यादा गुजराती and इंग्लिश, ठीक है? तो वो जब अपनी फ्लाइट कर रहे थे और उस टाइम दुश्मन के साथ कुछ फाइट चल रही थी, तो उनके फ्लाइट को किसी मिसाइल ने अटैक कर दिया। अब जेट फाइटर पाइप जो होती है उसमें मैकेनिज्म होती है कि उनके सीट के साथ एक पैराशूट लगी हुई है, वो पूरी जो सीट होती है वो ऊपर होके they can safely land. So he could eject himself from the plane and safely landed on the earth. उनको बहुत ज़्यादा acclaims मिली, बहुत सारे medals मिले। 5 years down the line, one day in the evening he was sitting with his family in a restaurant. वहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ खाना खा रहे थे और एक आदमी नेक्स्ट टेबल से उठ के उनके पास आया और उनको बोला कि आप कैप्टन विशाल हो? तो कि हाँ, आप कैसे जानते हो? तो कि 5 साल पहले आपकी फ्लाइट जो जेट फ्लाइट है उसको मिसाइल लगी थी। तो कि हाँ, वो आपको कैसे पता? तो कि आपकी पैराशूट जो पैक करते थे वो मैं था। आई यूज्ड टू पैक योर पैराशूट एंड ही वाज स्टन्ड कि उस दिन अगर उसने ठीक से अपनी पैराशूट पैक नहीं करी होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता, मैं जो लाइफ हैप्पीली जी रहा हूँ वो जी नहीं पाता। उस टाइम उन्होंने थैंक्स कह दिया। जब रात को घर आए तो काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में आने लगी कि जब मैं डेली ऑफिस में जाता था तो ये इंसान रोज़ मुझे मिलता था, बट आई बीइंग कैप्टन एंड ही बीइंग हवलदार, मैंने कभी उसको गुड मॉर्निंग नहीं बोला, मैंने कभी उसको थैंक यू नहीं बोला, मैंने कभी उसको एक्नॉलेज नहीं किया किसी बाबत में, एंड ही वाज नॉट एबल टू स्लीप दैट नाइट। इन आवर लाइफ ऑल्सो मैनी पीपल आर पैकिंग आवर पैराशूट्स डेली, maybe physical parachute, maybe spiritual parachute, maybe psychological parachute, and they help us in getting away better way in our life, and we are many a times failing them to acknowledge. So I want to begin my communication with you with acknowledging all of you for your presence, because see, today is Saturday evening and you might have many things to do, but you choose to come over here. Okay, that is number one. Also would like to acknowledge the book club and the Namrata who has taken lot of pain to make this happen, and the Ahmedabad International Literature Festival, those who have given me the opportunity to be with you all. So thank you very much again. Okay, now we'll go ahead. See, this is the workshop and it is not one-way communication. So there are basic ground rules for the workshop that we all will follow. Number one is participation. My workshop format is such that आप जितना participate करोगे आपको उतना मिलेगा, जो participate नहीं करेगा उनको कुछ नहीं मिलेगा. So try to be more interactive, more participative, so that you can get more and more things out of this workshop. Second is respect one another. See, we are going to talk about our own life, we are going to talk about our own kids, and we may come out with some important aspect of our life in the sharing. So we will respect each other. Full confidentiality, we will see to it કે અહીંયાથી બહાર જઈએ એટલે જે પ્રિન્સિપલ ડિસ્કસ થયા છે એને આપણી લાઈફમાં લઈ જઈશું,
પણ જે આપણી સ્ટોરીઝ છે એને અહીંયા મૂકીને જવાય. બહાર જઈને પ્રિફરેબલી we will not do any gossip about someone's personal life. So we'll be very careful about it. I would request everybody to please check your mobiles. साइलेंट है कि नहीं वो एक बार निकाल के देख लीजिए, भले आपने साइलेंट किया हो फिर भी. ठीक है. Why we want mobile to be silent? कभी हम कोई important मूवी देख रहे हैं और उसमें सस्पेंस ओपन होने वाला हो और कोई आगे वाले का मोबाइल बच जाए तो कैसा लगता है? It should not happen when we are discussing very very important issues of our life as well as our kids' life. Last is we will acknowledge each other. Why we want to acknowledge each other? When we acknowledge people, see, આપણે જ્યારે બહુ નાના હતા સ્કૂલમાં ભણતા હતા ત્યારે આપણે કેવી રીતે એક્નોલેજ કરતા હતા? અવાજ કર્યા વગર આપણને કોઈ કહેતો. યા લેટ્સ ડુ એવરીબડી. બધા કરીએ, ચલો લેટ્સ ડુ બધું બાજુ પર મૂકીને. યા ધેટ્સ ફાઇન, ગ્રેટ, એક્સેલન્ટ. સો કેવો આનંદ આવે આટલી નાની વસ્તુ કરીને તોય આપણને ખુશ હેપીનેસ ફીલ થઈ. ઓકે, અવાજ કરીને એક્નોલેજ કરવાનું કહેતો કેવી રીતે એક્નોલેજ કરતા હતા? લેટ્સ ક્લેપ ટુગેધર. જોરથી બધા ક્લેપ કરો. અવાજ ક્લેપિંગ હેઝ ઇટ્સ ઓન સાયન્સ. બરાબર ને? આપણે જોરથી ક્લેપ કરીએ તો આજુબાજુ કોઈ સૂતું હોય તો ઉઠી જાય. That is one. Second, we have pressure points in our hand. જે stimulate થાય and it feels really energetic. And when we clap together, it creates an energy around us. So the environment becomes energetic and vibrant. And when we acknowledge someone about their own sharing, he also or she also feels good about it. So we have been given such a beautiful innocent kids who always smile, and as we grow either they stop smiling or we stop smiling majority of the time. And why we become parent? The first question is हम parent क्यों बनते हैं? Anybody will give the answer? Yeah, it's our wish. It's our wish, but wish है लेकिन वो हम बन के क्या चाहते हैं? That is another thing that we want to think about. To create more happiness in the family. To create more happiness in the family. A good individual. Parent बन के हम good individual बनना चाहते हैं. I am talking about my ourselves. Yeah. Yeah. To be happy. To be happy. Have a kid is to be happy. To be happy. Okay. Any other reason? To feel complete in one way. To feel complete in one way after becoming a parent. Absolutely. And also on another note, I would add that we try to relive our childhood and really relive through them, which is wrong at one time, but certain times without imposing our wishes, we try to relive our childhood. In turn, we try to be happy, fulfilled, happy and satisfied. But how we are at present? Not happy, stressful, શું કરી નાખ્યું, એવા બધા વિચારો ઘણી વખત આવે આપણને કે યાર ના કર્યું હોત તો સારું હતું અથવા આ કંઈક જુદું હોત તો સારું હતું. So we become parent to be feel happy, satisfied, but in turn we become extremely stressful in dealing with them. ठीक है ना? This workshop is to bring you out of that stressfulness and make you feel happy again about you being a parent. Okay? So we'll do and go through this. Now for next 3 to 4 minutes, I am going to play a soft music and एक kind of meditation visualization process से मैं आपको पसार करूँगा और there are few important things to do in that. So आपके पास जो कुछ भी है उसको साइड पर रख लीजिए, थोड़ा टटार बैठ जाइए. जो धीरे धीरे अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे. आपकी सांस धीरे धीरे अंदर जा रही है और वही सांस धीरे धीरे बाहर आ रही है. Inhale and slowly exhale.
Inhale and slowly exhale. Observe your breathing, and air is traveling from your nose to navel and from navel to nose. आप अपने लेफ्ट फुट के नीचे एक वाइट बॉल को इमेजिन करेंगे जो फुल ऑफ लाइट है। अपने लेफ्ट फुट के नीचे एक वाइट बॉल को इमेजिन करेंगे जो फुल ऑफ लाइट है, और वो धीरे धीरे आपके लेफ्ट फुट के अंदर एंटर हो रहा है। इट इज पासिंग थ्रू योर सोल, ग्रेजुअली क्लाइंबिंग, रीचिंग टू योर लेफ्ट एंकल, touching each muscle, touching each arteries, touching each ligaments, and gradually it is climbing up, reaching to your left knee. That white light ball is gradually reaching to your left side of the hip. Now it has entered your abdomen and passing through the left side of the intestines, kidney. That white light ball is reaching to your left side of the chest, passing through your heart, lungs, and left side of the shoulder. It is just passing to your left elbow and left wrist, and then coming up from your left hand, it is just entering into left side of your neck. From left side of your neck, it is gradually climbing into your skull, passing through the brain. It is also illuminating your mouth, ears, and left side of the eye, crossing the brain from left to right through corpus callosum, reaching to your right side of the brain, and gradually started descending from your right side of the brain. Now the speed of the ball is little faster. It is coming down fast, reaching to your right side of the shoulder, right side of the chest, passing through your lungs, reaching to your abdomen, liver, coming to right side of your hip. Gradually that illuminated white ball is reaching to your right hip, reaching to your right knee, and through your right foot, it just comes out of your body. I will take back you maybe around 20 years, 30 years or 40 years, when you were a teenager, maybe around 14, 15 or 16. Just try to be at that time. आप जब teenager थे, उस समय पर आप जाने की कोशिश करेंगे। जब आप टीनेजर थे, एट दैट टाइम अगर आपने कोई अच्छा अचीवमेंट किया है, आपको कोई एक्नॉलेजमेंट मिला है, आपको कोई मेडल मिला है, आपकी कोई अच्छी बर्थडे सेलिब्रेट की गई है आपके पेरेंट्स के द्वारा, या आपने कोई अच्छा सा समय पसार किया हुआ है अपने पेरेंट्स के साथ, उसको याद करने की कोशिश करेंगे। एंड उस समय के साथ आपका जो फीलिंग्स है उसको भी कनेक्ट करेंगे। उसी दौरान आपने कोई एज अ टीनेजर मिस्चिफ करी है, मस्ती करी है, तूफान किया है, यू हैव बंक योर क्लास और पेरेंट्स से झूठ बोला है, उसको आप याद करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ जुड़ी हुई फीलिंग्स को भी आप याद करेंगे। Little fast forward. The child for which you have come here, उसका जब बर्थ हुआ था, उस मोमेंट को याद करने की कोशिश करेंगे। You are in the nursing home or in the operation theater, and your child is just born. और उस बच्चे को आपने पहली दफे देखा है, या उस बच्चे को आपने पहली दफे छुआ है, या उसको फर्स्ट टाइम अपनी गोदी में लिया है, उस टाइम की आपकी जो फीलिंग है
उसको अभी याद करने की कोशिश करेंगे. You will try to visualize that moment as well as try to feel the feeling that you had at that moment. उसको याद करते करते आप अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे. धीरे धीरे you are inhaling and slowly exhaling. अपनी सांसों की आवन जावन के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे. Thank you so much. You can open your eyes. Happened as when you were a teenager, and one when your child was born. What was your experience? Who will be the first brave to do that? Yeah, sure. In teenage, what happened that time I was in 10th. આગળ આવી જશો તો everybody will be able to see you and મેથ્સ મારા માટે હંમેશા પેલું આ પેલા બધા પૂરતા પેલા નંબર્સ ને એ ટાઈપનું હોય ને એ ટાઈપનું જ હતું ને મેથ્સ આવે ને મને બહુ જ કંટાળો આવે. એ ટાઈમે સેમિસ્ટર એક્ઝામ્સ એટલે પ્રિલિમિનરી એક્ઝામ્સની શરૂઆત હતી અને મને એટલું બધું કંટાળો હતો તો ક્લાસમાંથી પાછળ અને હંમેશા મેથ્સના ક્લાસમાં પાછળ જ બેસવાનું કારણ કે ભણવું ના હોય તો માથું નીચું રાખીને ઊંઘી જવાય અને પાછળથી ભાગી અને સામે સડસડાટ જે દોડતી જતી તો સામે પ્રિન્સિપલ મળે. તો અત્યારે એ મોમેન્ટ યાદ આવે છે તો એવું લાગે છે કે વી હેવ ડન ધેટ ઓલ્સો. પછી શું? પછી પ્રિન્સિપલે કીધું ક્યાં જાય છે મેં તો હું તો વોશરૂમ જઉં છું એટલે આમ ઊભા રહ્યા અને પછી મને કીધું હવે પતી ગયું ચલો ક્લાસમાં પાછળ. તો દેટ વોઝ મોમેન્ટ. Thank you so much. Any other mischief? 12th પછી ડિપ્લોમા કરતા હતા પોલિટેકનિક રાજકોટમાં, ગવર્મેન્ટ પોલિટેકનિક રાજકોટ. So there was a free period when there was no lecture. So we had a 5 people group. અમારા 5 મિત્રોનો ગ્રુપ હતો અને અમે બધે સાથે જ હતા. ફ્રી પીરિયડમાં we were just roaming in corridor. એ વખતે લાઇટનો લેમ્પ આમ લટકતો તો સડનલી મને જ વિચાર આવ્યો. મેં કીધું મારો એક ફ્રેન્ડ છે ઉપાધ્યાય રાજેશ, મેં કીધું ઉપા આ લેમ્પને તું ટચ કરી દે. સિન્સ વી વર ઇન રાજકોટ આઈ વોઝ સ્પીકિંગ કાઠિયાવાડી તો કે ન પહોંચાય. મેં કીધું હાલો આપણે કરીએ. વી સ્ટાર્ટેડ દેટ કોમ્પિટિશન. આમ રન અપ કરીએ ને પછી જમ્પ કરીએ એમ તો બધાએ ટ્રાય કરતા હતા એવી રીતે. દેર વોઝ નો વન ઇન કોરિડોર અને સડનલી એવું થયું કે ઉપાધ્યાયનો જ્યારે ટર્ન આવે ને એ ટચ ઇટ વેરી મતલબ હાર્શલી અને લેમ્પ નીચે પડ્યો ને એ જ વખતે બરાબર પ્રિન્સિપલ એન્ટર થયા કોરિડોરમાંથી પાસ થયું એમ અને વી ઓલ 5 વેર ટેકન ઇનસાઇડ ધી ઓફિસ રૂમ અને ત્યાં સુધી બેસાડ્યા. કંઈ કીધું નહીં અમને. પ્રિન્સિપલ સારા પણ થોડું એમ કીધું કે આ બધું સારું લાગે તમે ભણવાની જગ્યાએ આવો તો ધંધા કરો છો. ત્યારે એટ ધેટ મોમેન્ટ આઈ રિયલાઇઝ કે આવું પણ આપણે કરીએ છીએ. થોડી વાર બેસાડ્યા પછી એ જતા રહ્યા. પછી પેલા હેડ કરે શું કરો કાંઈ નહીં સાહેબ બેસાડ્યા આવવા દો કે that was the incident which came. Excellent. Thank you so much. Coincidentally, હું પણ રાજકોટનો છું. આઈ થિંક 8th 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં હોઈશ એટલે રાજકોટમાં અમારું જે ઘર હતું ને એમાં ફર્સ્ટ ફ્લોર પર અમે હું ને મારો નાનો ભાઈ જે ડૉક્ટર છે આજે અમે કંપનીમાં ફિનાન્સ હેડ છું તો અમે લોકો બંને જણા રૂમમાં રમતા હતા બરાબર છે. અને બેટિંગ હું કરતો હતો અને મેં જોરથી શોટ માર્યો અને સામે ટીવી હતું અને ટીવીમાં ક્રેક પડ્યું બરાબર છે. હવે આનો ત્યારે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ટીવીનો જમાનો હતો આપણે મોસ્ટ ઓફ અસ બરાબર છે. એટલે અમે શું કર્યું થોડુંક ટ્રીક કરી બરાબર છે કે પપ્પાને મમ્મીને ખબર ના પડે તો આપણે ટીવીની ઉપર પેલા છે ને બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ટીવી ઉપર આગળ પેલો કલરવાળા એકચ્યુઅલી બરાબર. એટલે આપણે શું પેલું ક્રેક તો પડી ગઈ હતી બરાબર છે. એટલે ટીવી ચાલુ કરીને જોયું ટીવી ચાલુ છે બરાબર. એટલે ખાલી અપરેન્ટલી બહારથી દેખાય છે ક્રેક એટલે આપણે શું કરીએ પેલું જે છે ને પેલી સ્ક્રીન ચડાવી દીધી આપણે. એટલે સ્ક્રીન ચડાવી દીધી એટલે આપણને કંઈ ખબર ના પડે. આપણા કરતા પેરેન્ટ્સ સ્માર્ટ છે બરાબર છે. એટલે સાંજે ટીવી જોયું બરાબર ખબર પડી ગઈ બરાબર. એટલે થોડુંક ખખડાયો. મેં કીધું ભાઈ મેચ કરેલું છે મારી ભૂલ છે એટલે થોડો ખખડાયો બરાબર છે અને થોડો મેથી પાક ખાધો બરાબર છે બરાબર છે. પણ આઈ રિમેમ્બર ધીસ ઇન્સિડન્ટ્સ બરાબર છે. એટલે આવું પણ કર્યું. Any good? અને જ્યારે આઈ થિંક હું 10મામાં હતો ત્યારે નાનપણથી મને છે ને ફ્લૂટ વગાડવાનો વધારે શોખ હતો.
તો એક વખત એવું થયું કે જ્યારે હું મારા ફાધરે બધા ઘરમાં બેઠા હતા ત્યારે એક બહારથી એક ફ્રૂટવાળો નીકળ્યો. પછી મેં જરૂરી મારા ફાધરને ખબર કે આને ફ્રૂટનો વધારે શોખ છે, મજા આવે છે વગાડવાની. પણ એ વખતે મેં સ્ટાર્ટ નહોતું કર્યું, ખાલી વાત કરી હતી ફાધરને. તો ફાધરને ખબર પડી કે આને ફ્રૂટનો શોખ છે અને આને ફ્રૂટ જોઈએ છે એ વખતે. તો એ જરા બહાર નીકળ્યા કારણ કે ફ્રૂટનો અવાજ આવતો હતો. એટલે મેં કીધું કે આવું ફ્રૂટ વાગી રહી છે. તો એ બહાર નીકળ્યા અને બહાર જ્યારે નીકળ્યા ને ત્યારે ફ્રૂટવાળો ક્યાંક દૂર જતો રહ્યો. મતલબ કે એ 5 મિનિટમાં એ ક્યાંક દૂર જતો રહ્યો. પછી મને અંદર આવીને કીધું કે ફ્રૂટવાળો તો દેખાતો નથી બહાર. તો કશો વાંધો નહીં, આપણે પછી કરી દઈશું. પણ અડધો કલાક પછી એ ખબર નહીં ગમે ત્યાંથી ફ્રૂટવાળાને શોધી નાખ્યો એને અને ફ્રૂટ પરચેસ કરીને પછી મને આવી. મને કહે તને શોખ છે ને, એટલે કે આજે મને રિસ્પેક્ટ છે મારા પેરેન્ટ્સ માટે કે એમને મારા માટે આટલું બધું કરેલું છે. મારી સાથે એવો ઇન્સિડન્સ બન્યો હતો કે મારા પાસે એક પોપટ હતો અને આઈ વોઝ ઇન 5th or 6th અને અમારો મેટ જે હતો એને પાંજરું સાફ કરવાની ડ્યુટી હતી. હવે એકવાર સમહાવ પાંજરું સાફ કરતાં પોપટ એમાંથી નીકળી ગયો અને ઉડી ગયો. હોલ ડે આઈ ક્રાઇડ લાઈક એનીથિંગ. આખી રાત હું સૂતી નહીં. પપ્પાને ખબર હતી. નેક્સ્ટ મોર્નિંગ બહુ જ મોડી રાતના સૂતી. નેક્સ્ટ મોર્નિંગ અરાઉન્ડ 9-10 પપ્પા એક નવા પાંજરામાં નવો પોપટ લઈને આવ્યા મારી પાસે. This is for you. फीलिंग्स योर being, आप उसको वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो. फिर भी उस टाइम कैसा फील हो रहा था? Out of very happy. Very happy, out of the world. It's great happiness when you know that you have created a life. A new life. Yeah. Excellent. Anybody else, something else? किसी के बच्चे को देखते, लेकिन जब अपना बच्चा हाथ में होता है तो ऐसा होता है इट्स लाइक मिरेकल. एक मतलब कल तक एक बड़ा सा पेट था और आज उसमें से एक बेबी निकल के हमारे सामने देख रहा है. Yeah, you feel happy, connected, You feel oneness. complete. You feel so loved. और उस मोमेंट पर एक फीलिंग आती है कि कुछ जब आप जी रहे हो वो फील रहेगा अपने बच्चे के लिए. ठीक है ना? इसको कुछ नहीं होना चाहिए. ये फीलिंग बहुत ज़्यादा रहती है. लव, वननेस, कनेक्टेडनेस विद दैट चाइल्ड. ठीक है ना? बट जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है हम क्या करना शुरू करते हैं उसके साथ? શાઉટ કરીએ, મારીએ, બાથરૂમમાં પૂરી દઈએ. બરાબર છે? Whenever you are dealing with your teenager, thing is this. If you understand this, you will realize कि teens जैसे teens कैसे ऐसा behave क्यों कर रहे हैं. ठीक है? This is the brain growth. The blue one is mature brain. It has myelinated and it has fully functioned. Whereas the green one is still not mature brain. There is a differential brain development in teenagers. उसमें क्या होता है कि ब्रेन के जो एरियाज रिवॉर्ड सीकिंग के साथ अटैच्ड है, हैप्पीनेस इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के साथ अटैच्ड है, रिस्क टेकिंग के साथ अटैच्ड है, वो सारे जल्दी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. मूड स्विंग्स के साथ जो एरिया अटैच्ड है वो जल्दी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. बट द एरिया विच कंट्रोल्स दिस, दैट इज द फ्रंटल कॉर्टेक्स. जजमेंट, क्या सही है क्या गलत है, ये करने से मुझे क्या कॉन्सिक्वेंसेस मिलेगा, वो एरिया 20 साल के बाद डेवलप होता है. और इसीलिए 10 साल का बच्चा आप जो बोलो वो सब कुछ सुनता है. वो जैसे 12-13 साल का होता है वो सामने जवाब देना शुरू कर देता है. मूड स्विंग्स, अभी हंसती हुई लड़की 2 मिनट में रोना शुरू कर देगी, या मैं और आप एक स्टेप्स देख के उतरेंगे और वो 10-10 स्टेप्स नीचे उतर के जाएंगे बच्चे, बिकॉज दे डोंट सी इट दैट देयर इज अ रिस्क इन दिस. ठीक है? एंड वो जब चेंज होते हैं ना तो हम रियलाइज नहीं करते हैं कि ये चेंज इसकी वजह से हो रहा है, एंड वी स्टार्ट रिएक्टिंग टू दैट एवरी मोमेंट, एंड दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ सेपरेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीनेजर्स. अगर आप ये समझ लोगे मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, वो टाइम मैनेजमेंट टीनेजर्स के पास वैसे नहीं होता है जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज दैट एरिया ऑफ ब्रेन इज स्टिल नॉट डेवलप्ड. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड रिवॉर्ड सीकिंग. मैंने कुछ किया और इमीडिएटली मुझे कुछ रिवॉर्ड मिला, आई विल डू इट मच बेटर, एंड वो रिवॉर्ड शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल थिंग कि तुमने अच्छा मार्क्स ला दिए तो विल गिव दिस. इट शुड नॉट हैपन दैट वे. So this is the differential brain development which happens, and once you realize, you can understand कि वो सामने जवाब देगा, that is normal. वो
रोने लगेगा या जल्दी से हंसने लगेगी, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल एट दिस एज. स्कूल से आके वो सब कुछ बताता था, अब नहीं बता रहा है, दैट इज नॉर्मल, बिकॉज दे वांट टू बी मोर सीक्रेटिव, दे वांट टू बी देमसेल्व्स. दिस इज नॉर्मल. वंस वी रियलाइज कि ये नॉर्मल है, we can change our behavior, I respond to them, and then we'll be able to do it powerfully. There are 4 different parenting styles. Many of you might be knowing this. If we keep expectation and demand on high on the x-axis and the emotions on the y-axis, if we have high expectations from our kids but there is low demand, you become a permissive parent. Permissive parent is allowing everything whatever child wants. And majority of the high influence society are that kind of, because they don't have time, so they want to give everything to them. Negligent, no emotions, no expectations. Authoritarian, very high expectations, no emotions. Majority of the time जिनके parents बहुत strict हुआ करते थे, they become stricter parent, and you are very strict with your kid. Military kind of atmosphere is there in the house. And last one is authoritative, where you have high emotions with your child and high expectations from your child also. When you are a permissive parent, lots of love, but there is no rule, there is no responsibility, there is no sense of direction. When you are lonely, negligent, child is not happy, incapable, there is no self-esteem. When you are authoritarian, incapable, belittled, low self-esteem and less happy. But when you are authoritative parent, like when required you are strict, along with that you show love, you show connection, you show lots of emotion to your child, and at that time your child is warm, love, compassion, happy, confident and capable. See what happens, majority of the time we shuffle in between this kind of parenting. Agar I am crossing the road and I see my child running fast, and if a car is coming, I pull him, we become authoritarian. That moment is authoritarian is fine. You cannot tell beta sachav je zero apacho. He will go and dash himself. But majority of the time, if we try to become authoritative parent, like with lots of warmth and with lots of expectations and demand, the parenting becomes much easier for you. And how? That I will tell you. किसान को बुखार था 10 दिन नहीं तो ये क्या अक्सर नहीं किसान इधर आओ कम है किसान इधर आओ फौरन इधर आओ See the facial expression of the child. क्या बात है इस नोट का जवाब दो ईशान मैं इतना मारूंगा के नीचे मत देखो ऊपर देखो मेरी आंखों में and answer me where the hell were you on Thursday where स्कूल नहीं गए तो कहाँ गए answer God damn it क्या बोल रहा what स्कूल बंद किया ईशान बंद किया क्या किया कहाँ गए कहाँ कौन सा रोड किसके साथ गए अकेले दिमाग खराब है तुम्हारा Are you out of your bloody mind? सारे साथ अकेले घूम रहे थे हमारा जरा भी ख्याल नहीं आया idiot ये क्या हो रहा है यार सुना तुमने और कहीं खोजा तो कहाँ ढूंढते थे हम लोग और ये किसने लिखा ये अपने नोट तुम तो ढंग से लिख नहीं सकते bloody dumber idiot इतना लिखा तो पास नहीं बनाते ईशान किसने लिखा ये नोट बताओ किसने लिखा है ईशान this is the last time I'm asking you who wrote this absent note वो किसने लिखा This is typical of authoritarian parenting. Or many a times we behave like this.
relationship with your child and low task. What I mean by high relationship is now that child has become little mature, he understand मुझे क्या करना जरूरी है और क्या करना नहीं जरूरी है. If we keep on hovering on the child, that becomes very difficult for that child to grow. Majority parent have that habit कि homework हुआ, complete हो गया कि नहीं हो गया, कितना किया, चलो मैं देख लेता हूँ. We keep on hovering on their child. है ना, helicopter parenting is one way कि उसके बच्चे के ऊपर ही रहते हैं हमेशा. We should not do that. It should be low task. वो अगर कहीं अटकता है, what I do with Siddharth, we always sit for around 2 hours before his exams are there, and he creates his own timetable. That हमारी exam आ तारीख शुरू थवानी है. This is the date today. From this date to that date, how I am going to study so that I can complete my syllabus 3 times, including his schools, his tuitions, his tabla, his squash. Everything is covered. He create that. Then at the end of the day or 2-3 days, I just have to check कि उसने किया है कि नहीं किया है. I don't have to be behind him कि complete हुआ है कि नहीं हुआ है, वो ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है. Yeah. But all like my child is not so sincere about studying. Like see, if I leave it on him, I don't think half the work will be complete. Why you want him to study? At least he has to do what is. No. The simple question is, आप वो study करें ऐसा क्यों चाहते हैं? नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ? I'm not saying you study for 10 hours. Just give 2 hours, but be sincere about what you are doing. Just give 2 hours of your day and complete your work. I got you. आप If नहीं कर रहे हो. See, suppose you, like you said, if I don't tell him anything, I just leave it. I just say complete your work, and then I don't look at him. I just forget. Don't even utter a word. Then that work will not be complete by night. Is there anything that he does by himself आपके बोले बगैर? He has lots of things. Like he goes, like he's very active. Physically he's very active. Like he loves to go for swimming. He loves to go for. उसके लिए आपको बोलना नहीं पड़ता. नहीं बोलना पड़ता. His class starts at 4:30. By 3:30 he's ready to go. Why? Because he loves doing it. That is why I am asking you But why see, you want him to study. But it's a part of like that you have to study. Why? You can't do. सचिन तेंदुलकर 10वीं तक नहीं पढ़ा है. Then see whatever he wants to achieve in life, but there is a certain level of education that he has to complete. Then why you have to be behind him for studies and not for swimming or anything else? Because that is what he loves doing all those things. He doesn't like studying. Right. See, it doesn't get into his head that it is important to study also. How it will go into his head? आप कुछ बोल रहे हैं. जरूरी है लाइफ में आगे जाने के लिए. Yes, this is necessary. See, sir, I'm not saying that you get 90%. I'm not having those expectations that you get 90%, you come first in the class. But at least you presentably you have to get at least 50% marks and pass out. Because see, I know that he's got interest in other things. See, I understand, but what I am trying to tell you and trying to tell you the principle behind this is, हम बचपन से जब बच्चे को स्कूल में भेजते हैं ना, तो हमारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती है कि वो पढ़ने के लिए क्यों जाता है. The most common reason why we send them to school is Correct behavior. अच्छा behavior हो, सब अच्छा सब भेज रहे हैं इसलिए हम भी भेज रहे हैं. Anything else? Basic education. Yeah. Why? No, I feel at one point of time, education can happen anyways. There is a lot of difference between wisdom and knowledge. Maybe that is where we need to. See, हम स्कूल में बच्चे को क्यों भेजते हैं पढ़ाई के लिए? I'm always ready to update myself. मैं जब मेरी बच्ची छोटी थी तो मैंने मतलब ऐसे वर्कशॉप मैंने बहुत किए. तो मुझे मेरी साइकोलॉजी ऐसी बन गई कि मेरी बच्ची की या मेरा बच्चा स्कूल में जा रहा है तो he should be a good listener, he should be a good observer, he should be a good speaker. तो मैंने बचपन से वही साइकोलॉजिकली उसको डेवलप किया. तो आज की तारीख में मेरी बच्ची बिल्कुल भी नहीं पढ़ती है. Still he is getting 99% in maths. See, I got your point. Absolutely got your point. See, हम स्कूल में बच्चे को क्यों भेजते हैं? What is the basic reason why we send them to school? To educate. We want them to know what is going there Want in to the be world. society. Because we can't teach him Education. रियल everything. रीजन क्या है बच्चे को स्कूल में भेजने का? रियल रीजन हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं. બોલ રહે આગળ જઈને સારું ભણે પોતાના પગ પર સક્ષમ થાય પોતાનું જીવન સરસ જીવી શકે.
That is the basic reason why we send them to school. अगर वो अपने आप होता तो स्कूल क्यों भेज दे? रोज सुबह तैयार करके भेजने की क्या जरूरत है? होमवर्क कराओ, ये सब कराओ। सी हम जो भी बोल रहे हैं उसमें हमें उनको क्यों भेजना है ना, वही बात हो रही है। उसको पता नहीं है कि वो स्कूल क्यों जा रहा है, वो क्यों पढ़ रहा है। 5 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को आप बोलोगे कि बेटा अभी अच्छा पढ़ोगे ना तो आगे जाके ये बनोगे। अब वो आगे जाके कब बनेगा? 22-25 साल का। अब इनका दिमाग कॉन्क्रीट थिंक करता है। आज मैं कुछ किया, कल कुछ मिला तो मुझे मजा आया। They cannot think something which is after 20, 15 years or 10 years. Now what happens is, मुझे जो चीज़ 10-12 साल के बाद मिलने वाली है उसके लिए मैं अभी क्यों पढ़ाई करूँ? They are not clear about that, and they do because we want them to do. जो चीज़ उनको करनी है ना, उनके लिए आपको उसके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। अब क्रक्स क्या है, वो अपने लिए ये क्यों करेगा, वो उसके दिमाग में घुसाना है। उसको वो पता चलना चाहिए कि मैं स्टडी अपने लिए कर रहा हूँ, एंड पेरेंटिंग इज ओनली दैट। वो पढ़ाई अच्छे से कर रहा है, वो अपना बिहेवियर अच्छे से कर रहा है, वो खुद अपने आप रिस्पॉन्सिबल हो गया है, वो खुद अपने आप सारी चीज़ों को केयर कर रहा है। वो तब करेगा जब उसको लगेगा कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मेजोरिटी ऑफ दी मदर्स हैव कंप्लेंट, बच्चा अच्छा खाना नहीं खाते हैं या खाते ही नहीं। छोटे बच्चों के साथ, जब छोटे पेरेंट्स के साथ मैं वर्कशॉप करता हूँ ना, तो ये कंप्लेंट कॉमन होती है कि खाना ही नहीं खाते, पीछे घूम घूम के फोर्सफुली खिलाना पड़ता है। व्हाई? बिकॉज वो आपके लिए खा रहा है, वो अपने लिए तो खा ही नहीं रहा है, वो आपको सेटिस्फाई करने के लिए खा रहा है। उसको खाने के साथ हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, फुलफिलमेंट, एंजॉयमेंट है भी नहीं, ठीक है ना। अब बच्चे को जब पता चलेगा कि मेरा स्टडीज, मेरा हैप्पीनेस है, मेरा सेटिस्फेक्शन है, मेरा एंजॉयमेंट है, मेरा फुलफिलमेंट है, तो उसके लिए आपको उसके पीछे नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप करने लगेगा। अभी उसको जिस जिसमें हैप्पीनेस हो रही है ना, वो सब बंद कर दो फॉर टाइम बिंग, एंड लेट हिम स्टार्ट स्टडी। अब कितने साल का है आपका बच्चा? He's 12, so must be in around 6th or 7th, ठीक है ना। Tell him to do one-way studies. एक हफ्ता आपको उसके पीछे रहना पड़ेगा, और जो भी बच्चे उस एज के हैं, if you follow this, things will happen very properly. कल स्कूल में there are around 7 subjects जो पढ़ाने वाले हैं आपके टीचर। बेटा आज उसको एक बार सिर्फ पढ़ लो। कल जब स्कूल में आपको पढ़ाते हैं तो सिर्फ ध्यान से उसको सुनना और घर आके उसका एक बार रिवीजन कर लो। अगर वो बच्चा 24 आवर्स में एक सिलेबस 3 बार करता है तो उसके दिमाग में ऑलमोस्ट 80% चला जाता है। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल में जाता है और स्कूल में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं तो ही इज रेडी विथ आंसर्स। उसको आंसर्स आने लगेंगे ना तो हैप्पीनेस मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, टीचर्स के सामने अच्छा दिखेगा, फ्रेंड्स उसको आके पूछने लगेंगे कि ये क्या है, ये कंप्लेंट, ये मुझे सिखाओ, ये सब चीज़ें। व्हाट हैपेंड, मैंने आज कुछ किया और कल हैप्पीनेस मिला, मैंने आज कुछ किया और कल मुझे मजा आया। और वो अगर एक हफ्ता भी ऐसा कर लेगा ना तो दैट हैप्पीनेस एंड जॉय एंड फुलफिलमेंट, प्राइड विल बी सो मच, फिर आपको उसके पीछे नहीं घूमना पड़ेगा। फिर उसको बोलो बेटा वीकेंड आता है, यू हैव लिटिल मोर टाइम, इस हफ्ते में जो चला है उसको एक बार पढ़ लो। हमारा ब्रेन लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसी तरीके से ले जाता है कोई भी चीज़। 24 आवर्स में 3 बार रिपीट किया और वीकेंड में चौथी बार रिपीट कर लिया, एवरीथिंग विल गो इनटू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। और फिर एग्जाम के टाइम उसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करे पड़ेगी, ही विल बी एबल टू डू इट सो पावरफुली, और वो हैप्पीनेस के साथ पढ़ाई करना शुरू कर देगा। आज मुझे सिद्धार्थ को सुबह 5 बजे उठाना नहीं पड़ता है, वो खुद उठ जाता है, बिकॉज उसको पता है कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, अपने हैप्पीनेस के लिए। वो शेड्यूल बनाता है तो उसको मजा आता है। एट द एंड ऑफ द डे ही इज वेरी कॉन्फिडेंट कि इतना हो गया है, अब मुझे कल इतना ही करना है। सो दैट हैप्पीनेस, प्राइड, that जुनून makes him drive for the things, ठीक है। उसको पता है कि अब मैं स्क्वॉश नहीं खेल पाऊंगा बिकॉज 29 को एग्जाम शुरू हो रहा है। वो 7 से 7:15 साइकिलिंग कर लेता है अपने आप, उसको पता है कि ये 15 मिनट्स मुझे साइकिलिंग करनी है, तो वो चला जाता है। सो दैट वे थिंग्स ग्रो एंड यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड स्टडीज। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बच्चे क्या करते हैं, न्यूअर थिंग्स, पेरेंट शुड बी फ्रेंड टू द चाइल्ड, पेरेंट शुड बी फ्रेंड टू द चाइल्ड। बट आप फ्रेंड हो जाओ, बट पेरेंट होना बंद मत करो, वो करना जरूरी है। अगर उसको सारी चीज आप प्रोवाइड करते रहोगे, जो उसको करना है वो नहीं करे तो वो क्यों वो करेगा? ऑब्वियस है ना। उसको अगर इंटरनेट मिल रहा है, उसको मजा मस्ती मिल रहा है, पॉकेट मनी मिल रहा है, मोबाइल मिल रहा है, घूमने को मिल रहा है, तो वो पढ़ाई क्यों करेगा?
उसको ये सब चीजें थोड़ी कम करो, वो बोर होना शुरू हो जाना चाहिए, फिर वो पढ़ाई करना शुरू करेगा, उसको पता चलेगा। और एक चीज बहुत क्लियर है, हमें सक्सेसफुल होने के लिए जिस चीज में बोर होते हैं वही बार बार करनी पड़ती है। रोज सुबह रसोई बनाना बोरिंग है, बट वो बनाएंगे तो ही लाइफ होगी। रोज सुबह जाके मुझे पेशेंट देखना है, वो करना ही पड़ेगा, वो वही चीज बार बार। सो हमें उस बच्चे को वही चीज सिखानी है कि जो चीज आप बोर हो रहे हो वही बार बार करोगे तो उसी में सक्सेस मिलेगी। मैथ्स प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, भले आप बोर हो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मिलेगा। सो यू हैव टू मेक द चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर ही इज डूइंग, ठीक है ना। वन डे सिद्धार्थ स्कूल से जब घर आया ना, आई टेल यू इट आफ्टरवर्ड्स। हम 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे, काफी समय से बैठ रहे हैं। चीजें बाजू पर रख लीजिए, दोनों हाथ सामने ले। कौन सा थंब ऊपर आया? जो पहले था वही, जो पहले था वही। वापस सेपरेट करिए, वापस ज्वाइन करिए, वही आता है हर बार। अब वापस करिए, जो थंब ऊपर है उसको नीचे ले जाइए, पूरा हाथ के साथ फिंगर पूरी पूरी। कैसा फील हो रहा है? थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है ना? वापस ला दो, वापस। अच्छा लगा? हाँ, बैठ जाइए। बचपन से हम लोग इस हाथ को ऐसे लव, लिमिट, लैटिट्यूड, दैट इज फ्रीडम एंड एक्टिव लिसनिंग। इफ यू डू दिस ongoingly, then definitely your parenting will become very, very powerful. Okay? As human being, our greatness lies not so much in being able to remake the world. That is the myth of the atomic age, as in being able to remake ourselves. છોકરો આમ થઈ જાય ને તો લાઈફ સરસ થઈ જાય, પાડોશી આમ થઈ જાય તો લાઈફ સરસ થઈ જાય, ક્યારેય નથી થવાનું. You have to be yourself, try to follow all these things, and then definitely you will have a different child in your house, because he will feel free to talk to you. There will be lots of love around, and there will be limit also. Like everything has its limit. સિદ્ધાર્થ knows કે 18 વર્ષ સુધી એને ટુ વ્હીલર નથી મળવાનું. એને આજ દિવસ સુધી એને જીદ નથી કરી મારે એક્ટિવા ચલાવવું છે. એને ખબર છે કે હું 17 વર્ષનો કોલેજમાં ગયો ત્યાં સુધી સ્માર્ટફોન નથી મળવાનો. એને આજ દિવસ સુધી મારી પાસે કે મારા વાઇફ પાસે જીદ નથી કરી. Definitely these are important tools, important things. What we have done is, એના સ્કૂલનું જે ગ્રુપ છે ને એને મારા વાઇફના એમાં કરી નાખ્યું છે, અને એને બીજું કંઈ ગૂગલ પર જોવું હોય તો એ મારા ફોન પર જોતો હોય છે. પણ every time he will ask, because password એની પાસે નથી હોતો, and we will open it and give it, એને અમારી હાજરીમાં જ એ વસ્તુ યુઝ કરે. So these rules are to be there in the family. So limits, if they are there, then definitely things will work much better. તમારું પ્રેક્ટિકલ સેમ છે? એક્સેલન્ટ. અને યુ આર હેપી વિથ ઇટ? ઇરિટેટિંગ લાગતું હોય પણ મેન્ટલી કે ફિઝિકલી હાર્મફુલ ના હોય ને એ બિહેવિયરને ઇગ્નોર કરતા શીખી જાઓ. મેજોરિટી ઓફ ધ ટાઈમ આપણે એ બિહેવિયરને ટોકતા રહેતા હોઈએ છીએ. આ ના કરને, આ કેમ કર્યું, આ ના કરને, આ કેમ કર્યું, આ ના કરને, અને એને મજા આવે કે આ મમ્મી પપ્પા પરેશાન થાય છે ને મને રમત મળી ગઈ છે એટલે કર્યા જ કરે. એને ઇગ્નોર કરો. બેઠા બેઠા મેં કીધું અવાજ કરતો હોય તો આપણે આપણું કામ કર્યા કરવાનું. 10 મિનિટમાં એને બોરિયત લાગશે એટલે મૂકીને એના કામે લાગી જશે. પણ તમારું ધ્યાન ગયું ને તો મજા પડી ગઈ. દેટ ઇઝ નંબર 1. નંબર 2, દિવસમાં એટલીસ્ટ 10 વસ્તુ એવી શોધો તમારા બાળકની કે જે સારી હોય અને એને સ્પેસિફિકલી પોઈન્ટ આઉટ કરીને પ્રેઝ કરો એને. સો વન ઇઝ ઇગ્નોર ધેટ બિહેવિયર વિચ યુ ડોન્ટ લાઈક, પ્રેઝ ધોઝ બિહેવિયર વિચ યુ લાઈક. તમે એના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું ચાલુ કરશો ને જે સારું કરે છે તો એ વધવા માંડશે બંને બાળકો માટે. અને થર્ડ ઇઝ there are few behaviors which are really harmful to the child mentally or physically, જેમ કે હાથ ઉપાડવો, અપશબ્દ બોલવા, વસ્તુ ફેંકવી. તો all those behaviors should have a negative psychological consequence. Negative psychological consequence means એને જે વસ્તુ પસંદ નથી ને, પસંદ હોય એ નહીં કરવા દેવાનું. જેમ કે એને આજે ગુસ્સામાં આવીને રિમોટ ફેંક્યું, એને ટીવીમાં એક સિરિયલ બહુ જ ગમે છે, બેટા આજે તે ટીવી ફેંક્યું ને, આજે આ સિરિયલ નહીં જોવા મળે. અને યુ બી ફર્મ વિથ ધેટ કે નહીં જ જોવા મળે. થોડું હજી 3 વર્ષનું બાળક હોય તો સિમ્પલ ઇઝ મમ્મા 2 કલાક બોલશે નહીં તારી સાથે, વાત પૂરી થઈ. ઓન ગોઈંગલી એ થયા કરશે ને એટલે ધેટ બિહેવિયર વિલ કમ ડાઉન કે આ યાર મજા નથી આવતી. પપ્પા સાંજે આવીને મને અડધો કલાક ફરવા લઈ જતા હતા અને આજે બંધ કરી દીધું કારણ કે મેં હાથ ઉપાડ્યો હતો. ગ્રેજ્યુઅલી ધેટ બિહેવિયર વિલ કમ ડાઉન. સો ઇફ યુ ફોલો ધીસ 3 પ્રિન્સિપલ્સ, definitely you will have better behavior from them. So you start doing that.
Anything else? 11-12 years થી એજ હું મારી ડોટરનું બુક રીડિંગનું તમે જે કીધું ને તો અવેઝની ક્લેમ રહી છે એટલે એક ચેન્જ થયો હવે ફેસિનેટેડ આખો એનો ફેન્સી વર્ડની એટલે અલાઉ કરવાનું Any others? Yeah. And in which she wants some support from, if you want to become a trainer of that teenager boys and girls education about the issues that we are at present handling, definitely you can contact me. I'll give number to her. They will contact me. I'll give you Your name? Tejal Jani. Tejal Jani. Thank you. They don't take you as granted. Allow them to take us as